किसी ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया कि अंदर ब्लास्ट हुआ है। सब लोग बाहर आए थे, हम लोगों ने सबने देखा, सभी मशीनें बाहर निकाल ली गई, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि अंदर हुआ क्या है। Trapped for a week, the Uttarkashi 4008 rescue drama continues to escalate as cracks emerged in the already collapsed tunnel. The Indian Air Force stepped in to lend the national and state disaster relief forces a hand. Experts have been roped in from Thailand to Norway. Drill and auger machines have been brought in from around the globe. And yet, India waits with bated breaths to see the 40 workers breathe free air. In the Indian state of Uttarakhand, a section of the Char Dham tunnel collapsed on November 12th. Since then, all eyes have been on Uttarkashi and the efforts to save the 40. Comparisons have been drawn to the famous Thai cave rescue, which even has its own Netflix series. Reports have emerged of the same part of the Char Dham tunnel collapsing a few years back. What exactly is going on in that part of the Himalayas? Why is it taking so long to save the trapped workers? And most importantly, was this an avoidable crisis? बड़ी जो इनकी मशीनें हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। अपने आप ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये भी मान चुके हैं कि अब इस टनल में काम करने का मतलब ये है सीधा बेहद बड़ा खतरा। क्या इन्हें इस बात की जानकारी पहले नहीं थी? Tensions continue to rise in Uttarkashi even as big question arose. Times Now reporters on ground reported a massive explosion at the site of the collapse, after which the machines employed on rescue work were pulled out. जबकि आप देखिए ये 4.5 किलोमीटर लंबी टनल है। टनल काम तकरीबन पूरा हो चुका है और इस पैच को छोड़कर आगे कैसे काम शुरू किया गया, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है बरखा, क्योंकि 4.5 किलोमीटर पूरा हो चुका है, तकरीबन 500 मीटर उधर से बचा है, 4 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है, लेकिन ये वाले पैच को 200 मीटर महज पैच आगे इन्होंने क्यों नहीं पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़े? Even as several state, national and even international teams have joined the rescue efforts, the operation remains more complicated than ever before, even after 7 days. The collapse has occurred at a depth of 270 meters, while the entire tunnel itself is 2,340 meters deep. The terrain does not exactly allow heavy machines easy access. In fact, loose soil and landslides continue to hamper the rescue operations. होता है जब अंदर में आपको लगता है कि बहुत जल्दी रीच कर पाएंगे, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि फ्रेजाइल नेचर है, जहां आपको लगता है कि वाइब्रेशन का ध्यान देना है, जहां आपको लगता है इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, तो वहां बड़े आपको लगता होगा कि ये बड़ा आसान है, लेकिन जब आप जाएंगे और खुद देखेंगे कि ये किस तरह से होता है, तो आप पाएंगे कि बहुत ही नाजुक स्थिति से करते हुए लोगों का मनोबल भी बढ़ा के रखना है। आपको लगता होगा कि अंदर वालों को, मुझे तो बाहर वालों को मनोबल भी बढ़ा के रखना पड़ता है कि बात आप करते रहिए कार्य। इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, ना कि उनका मनोबल, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें ताकत मिलती है कि हम उनको सही ढंग से बाहर। Wide steel pipes of about 900 millimeters in diameter have been pushed through the rubble to deliver supplies to the trapped workers, while communication was established using walkie-talkies. As of now, the 40 trapped are being provided with food, water, and oxygen. However, the latest reports of rescue workers evacuating the tunnel are worrying. हम यहाँ 4 दिन हो गए आए हुए और पर डे हमें यही आश्वासन मिलता है कि कल सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। कल रात आ गए हैं, मशीन तो अंदर चली गई है, अब क्या कर रहे हैं अंदर वो तो समय बिताएगा। While the exact cause of the collapse is not known yet, it was likely caused by loose rocks. A fractured or fragile rock may have been overlooked
or may have been weakened by seepage of water. A comprehensive investigation after the rescue will reveal exactly what caused the collapse. But the fact remains, cutting mountains in that part of Uttarakhand is a risky business. अमेरिकन ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया, असेंबल उसको किया गया। 24 मीटर तक की जो खुदाई है वो की भी गई, लेकिन उसके बाद वो बुरी खबर आती है जो हम सब नहीं चाहते थे। मशीन ने काम करना बंद कर दिया। तस्वीरें यहाँ पर आपको जरूर दिखा देंगे। मशीन ने काम करना बंद किया, ड्रिलिंग रुकी और उसके बाद काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। In 2019, the same part of the tunnel, 200 to 300 meters from the entrance, had collapsed as well. However, at the time, thankfully, no one was trapped and only the construction was delayed. Due to the nature of the collapse, there are essentially two ways to save the trapped workers: either drill blast method or using tunnel boring machines. Blasting rocks may be tricky business, while the boring machines are 200-crore behemoths that struggle to operate in these regions. The Himalayas are still a young mountain range, growing, moving and shaking. Experts say a proper geological and ecological analysis is required to greenlight any massive infrastructure project in most parts of these mountains. आर्मी भी डिप्लॉय की? नहीं, अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, चूंकि NHI DCL उसकी कार्यदायी संस्था है और उसमें सभी प्रकार के जो भी विशेषज्ञ हैं सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। Times Now reporters on ground flagged rescue workers evacuating the tunnels after an explosion. While the blast may have been part of the rescue efforts, the reports are still concerning. Uttarakhand's chief minister has sought a report from all concerned parties and has been taking stock. Union ministers too have reached the ground zero. हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और इस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। The hostages of the Char Dham tunnel collapse await rescue even as renewed efforts are being made. With complications at every step, it remains to be seen how long it will finally take for the Uttarkashi 40 to be rescued from their purgatory.